हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वी आर बैक विद आवर यूजुअल इवनिंग टाइमिंग्स एट 7 पीएम। और पिछले 15 दिनों से तकरीबन वी आर होल्डिंग आवर फोरेंसिक लेक्चर्स एट दिस टाइम एंड ईच वन ऑफ देम हैज़ बीन अ वंडरफुल मेमोरी फॉर मी। होप इट्स प्रोवाइडिंग अ गुड एक्सपीरियंस टू यू ऑल्सो। ओके, रिमेंबर हमारा जो अल्टीमेट गोल है दैट इज टू क्रैक नीट पीजी एंट्रेंस 2021। अभी थोड़ा समय है हमारे पास, we've got few months in between, and in this time we want each one of you to be prepared thoroughly for the subject of forensic medicine. मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ऑल्दो बताया था, आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश इट tonight for all of you again that when you will appear for NEET PG examination, the usual weightage of forensic questions in that examination is about 10 questions. Okay, तकरीबन 10 सवाल आते हैं और आई अंडरस्टैंड जो भी नीट पीजी एस्पायरेंट्स हैं दैट 10 सवाल आर नॉट स्मॉल, कम नहीं होते। 10 सवालों में आपको आज की डेट में मालूम है रैंक्स जो हैं वो हज़ारों में स्लिप करती हैं। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम ये कोर्स ख़त्म करें तब तक आप लोग 10 के 10 सवाल करेक्टली आंसर करने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हो। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आज हम अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेक्चर पे हैं। द नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ the injuries that we have taken on since last 5 days, and today we are discussing a very important topic in injury, that is medico legal aspects of injuries or medico legal aspects of wound. आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंजरीज की पनिशमेंट किस तरीके से दी जाती है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग वहां पर बढ़े, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा एक बारी और वेलकम, हेलो एंड नमस्कार। माय नेम इज डॉक्टर सुमित तेलेवार, आई एम एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन एंड हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द पीजी एंट्रेंस टीचिंग, और यू कैन से कोचिंग, और यू कैन से मेंटरशिप फॉर 15+ years नाउ, एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर जो भी मेरी पिछली 15-16 साल की जर्नी रही है कि उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ एंड आपसे भी फीडबैक ले पाऊँ कि आप लोगों को किस तरह की डिफ़िकल्टी आती है, किस तरह की मुश्किलें आती हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, आप किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो। एंड इनसाइड ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज़ द पोर्टल हाउ वी कैन अटैच। आप अपने फ़ोन में तुरंत टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड जब आप उसके बाद में इस लिंक पे लॉगिन करोगे विच इज़ livedaily.me/neetpg, यू विल बी कनेक्टेड टू मी, और जिस भी तरीके की क्वेरी और डिफ़िकल्टी आपको आती है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन टेक अप योर क्वेरीज। ओके जी, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप मेरे साथ तो आ जाओगे, मगर आपको बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं, और बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए भी आपको एक कॉम्पिटेंट पोर्टल चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स जहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन टीचर्स का अपने स्टूडेंट के साथ नहीं हो सकता बिकॉज आप जो है वो क्लासरूम में नहीं जा पा रहे हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ अवेलेबल फॉर यू इन द मार्केट। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आप पाएंगे लाइव क्लासेस, interactive classes with educator. Yes, when you will give interactive classes with educator you will have live polls. okay, जहाँ पर आप MCQ लाइव अपने एजुकेटर के साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। that will give you the feel कि एग्जामिनेशन में MCQ अटेम्प्ट करना किस तरीके की probability रखता है। and not only that, अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है that there are certain queries जो आपके पास रह गई हैं ड्यूरिंग योर इंटरेक्शन विद द एजुकेटर, यू हैव लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। आफ्टर एवरी फ्यू क्लासेस देयर इज अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो एजुकेटर आपके साथ में होल्ड करता है, सो दैट यू कैन पुट फॉरवर्ड
your queries as soon as possible. Okay, देखते हैं हमारे साथ में आज who all are already there. So we have our usual student Minal, who is already online. Hi, hello Minal. And I guess our more usual students are going to come up and join this portal pretty soon. ओके, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे एक और क्लासिकल चीज है जो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, दैट इज स्पेशल क्लासेस. ओके, आप जब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ऐप पे जाओगे, वहां पर आपको टैब दिखाई देगा स्पेशल क्लास. उस टैब को आप दबाओगे एंड यू विल गो इनटू सम लवली स्पेशल क्लासेस स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म किस तरीके का है. प्लस प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है. स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री. ओके, प्लस प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का, बिकॉज दे कम विद ह्यूज डिस्काउंट ऑफर्स. इससे नीचे का सब्सक्रिप्शन नीट पीजी के एंट्रेंस के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड. इफ यू टेक दीज सब्सक्रिप्शंस, यू आर नॉट somebody who is going to miss up anything that is loaded into the plus subscription channel. नए टीचर, पुराने टीचर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एग्जामिनेशन, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, सब कुछ मौजूद है. प्लस सेक्शन लेने के लिए आपको एक साल के लिए खर्च करने पड़ते हैं 22,500 रुपये. 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए ओनली 4,500 रुपीज मोर, दैट इज 27,000 रुपीज. सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ओके, अगर उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, देन यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर सुमित लाइव, और ये आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिलाता है. यूज माय रेफरल कोड टू गेट दैट सब्सक्रिप्शन एट 10% बोनस. आप इसको पे कर सकते हैं जिस तरीके से आप पे करना चाहें, एंड वंस यू हैव डन दैट, यू आर रेडी टू मूव इनटू नीट पीजी प्लस सेक्शन. ओके, ओके, ग्रेट. दैट वाज द इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नीट पीजी प्लस सेक्शन पे जल्दी से जल्दी आ जाओ एंड हम वहां की अपनी जर्नी भी फटाफट स्टार्ट कर पाए. बट नाउ इज द टाइम दैट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द वुंड. आज हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स आर गिवन व्हेन पीपल सफर इंजरीज which have been provided to them voluntarily by other human beings. Okay, उसके लिए हम सबसे पहले कुछ लीगल डेफिनेशंस जानेंगे and we will find out some legalities around the injury. Okay, so the first thing that we are venturing into right now is the topic where we differentiate between type of injury versus nature of injury. Okay, तो अगर आपने पिछले कुछ दिनों से अपना ये लेक्चर फॉलो किया है तो आपने देखा होगा वी स्टार्टेड इंजरीज विद blunt injuries and then sharp weapon injuries, then we talked about regional injuries and then we talked about road traffic accident. Okay, उन सभी चीजों में what was the common factor? We were talking about different names of the injury, like we were talking about abrasions, we were talking about lacerations, contusions, incised wound, stab wound, chop wounds, etc, etc. In road traffic accident, we talked about one scenario. Road traffic accident is a scenario where people end up getting a lot of blunt injuries on their body. Okay, the combination of variety of blunt injuries. So all these injuries, they are basically called as types of injury. ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं blunt और sharp और pointed weapon injury, these are type of injury. जो मैंने अभी आपको exemplify किया, they are abrasion, contusion, lacerations, incise wound, stab wound और chop wound. ठीक है, but on the other hand there is something else to the injury also which is legally very important. Okay, which is legally very important, and that is nature of injury.
Now, what do you mean by nature of injury? The injury could be simple, or it could be grievous, or it could be dangerous. So, a doctor who is practicing medico-legally not only has to categorize the type of injury that a victim has sustained because of an act of road traffic accident or because of an act of assault provided to him by a third party, he also has to provide legal opinion regarding whether the injury is simple or grievous or dangerous, because punishments उसी हिसाब से दी जाती हैं इन दी लॉ. ओके, सो मैंने आपके लिए एक छोटा सा footage बनाया है here where I am marking it with an arrow, that whenever you are describing an injury, what are the things that you should always describe about the type of injury. Okay, so whenever you are describing, let's say, an abrasion, so you need to describe the site of abrasion, you need to describe the dimension of the abrasion, you need to describe what kind of a shape that injury has, you need to describe fixation of that injury from two fixed bony points. ओके, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी भी इंजरी के बारे में हमेशा डिस्क्राइब करनी चाहिए. साइट, डायमेंशन, शेप, फिक्सेशन फ्रॉम टू बोनी पॉइंट्स. ओके, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द पांचवी थिंग इज वेदर द इंजरी इज सिंपल, ग्रीवियस और डेंजरस. ओके, so now I think you've got it started to get an idea about the clinical aspect of understanding an injury. That theoretically आपको सिर्फ इंजरी पता नहीं होनी चाहिए, you should know how the injury is going to be seen in the court of law, and how that injury will be seen in the court of law is what your opinion about that injury is. Okay, so हमने क्या देखा नेचर ऑफ इंजरी में? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंजरी, सिंपल, ग्रीवियस एंड डेंजरस. ओके, what are simple injury? Simple injuries are those injuries which are neither extensive on the body nor does they involve any vital body organ. They would heal by themselves without leaving any significant scar. Okay, now जब भी कोई इंजरी हील होती है, there is bound to be a scar tissue formation, but when we are saying it's a simple injury, there would be no legal significance to that scar. Fine. Now what is a grievous injury or popularly known as grievous hurt? वो हमें याद नहीं करना. Why? Because grievous hurt itself is defined in section 320 IPC. grievous hurt का एक legal definition है क्योंकि grievous hurt IPC 320 सेक्शन में लिखा गया है. सो IPC सेक्शन 320 में जो कुछ लिखा गया है, अगर वो कोई भी इंजरी उस IPC सेक्शन 320 में लिखे गए पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है तो वो ग्रीवियस हर्ट है, अदरवाइज वो ग्रीवियस हर्ट नहीं है. एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट आर डेंजरस इंजरी. रिमेंबर, dangerous injuries are those injuries which endangers life. How? Number 1, because they involve a vital body organ, or number 2, they are extensive over the body, and because of these two factors they pose an imminent threat to life. Okay, so what are dangerous injuries? Injuries which pose an imminent threat to life because they are either extensive over the body or they involve vital body organ are categorized as dangerous injury. आगे बढ़ते हैं. ये तो कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो डेफिनेटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे you'll get to see something more which is more useful towards solving questions, because हमारा ultimate goal है कि आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ.
Okay, so we are picking up two very important legal definition. The first one is injury itself. The first one is injury itself, and legally injury is defined in section 44 of IPC, and it says any harm whatsoever caused illegally to a person in body, mind, property and reputation is called as injury. Okay, so these are four golden words of injury. So what are four golden words of injury? Body, mind, property, reputation. Any harm given illegally to a person, either in body, mind, property or reputation, is called as injury. On the other hand, there is a closely associated word, एक उसी के साथ में बड़ा closely associated word है, उसको बोलते हैं hurt. इंजरी और हर्ट थोड़ा डिफरेंट है. हर्ट लॉ में किस तरीके से डिफाइंड है? हर्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 319 of Indian Penal Code or IPC, and it says any pain, disease or infirmity caused to a person is said to be hurting him. तो हमने क्या देखा? हर्ट के तीन गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं? 3 golden words of hurt are pain, disease और infirmity. और इंजरी के 4 गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं? बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन. डेफिनेशंस कहाँ दी हुई हैं? इंजरी इज डिफाइंड इन सेक्शन 44 ऑफ IPC and hurt is defined in section 319 of IPC. ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को अलग अलग ही इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट फॉर इंजरी, अभी मैंने कहा ना आपको कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हम क्या देखना चाहेंगे कि इंजरी को पनिश कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ना एक चीज याद रखनी है. यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वेन एवर वी से इंजरी एंड IPC, because punishments of injury shall come in the sections of IPC. इंडियन पिनल कोड में ही पनिशमेंट है क्राइम्स की, तो इंजरी की भी वहीं पर होगी. The sequence of section is 319 to 326 and then 334 and 335. ओके, सो जब भी कोई आपसे इंजरी और IPC की बात करे, whenever somebody says, do you know where injuries are reflected in Indian Penal Code? As a student, automatically your mind should go that we are talking about section starting from 319 to 326 and then 334 and 335. Okay, let's see what is written in these sections about injury. So section 319, from where this sequence start, it gives definition of hurt. वो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था. 319 defines hurt, और हमने क्या देखा था? Any pain, disease or infirmity given to a person is said to be hurting him. So 319 defines hurt. 319 has definition of hurt. 320
has definition of one more format of hurt which is called as grievous hurt. ठीक है, one of the most important IPC sections for any graduate who is graduating through forensic medicine in India, they should know section 320. Okay, they should never confuse with it. 320 section is associated with grievous hurt, how grievous hurt is defined. Then 321 is defining an act called as voluntary causing hurt. तो 321 में डिफाइन किया गया है कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट हम किस चीज को बोलेंगे. ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, अपने आप से. ओके, 322 में डिफाइन किया गया है वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किसको बोलेंगे. ठीक है, तो अभी तक सीक्वेंस बड़ा सिंपल है. 319 इज डेफिनेशन ऑफ हर्ट, 320 is definition of grievous hurt, 321 is definition of voluntary causing hurt, 322 is definition of voluntary causing grievous hurt. Then 323 से स्टार्ट होती है पनिशमेंट. तो भाई पनिशमेंट पहले किसकी आएगी, जिसकी डेफिनेशन पहले थी पनिशमेंट भी उसकी पहले आएगी. तो 323 gives or tells us what will be the punishment for hurt. See, whenever I say hurt और मैं उसके पीछे प्रीफिक्स नहीं लगा रहा ग्रीवियस, इट ऑटोमेटिकली मीन्स सिंपल. ठीक है, हर्ट मीन्स नॉर्मल सिंपल. अगर मैं उसके पीछे प्रीफिक्स लगा रहा हूं ग्रीवियस, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रीवियस हर्ट. सो 323 इज पनिशमेंट फॉर हर्ट, या आप अपने सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए इस तरीके से कह सकते हो दैट 323 इज पनिशमेंट फॉर सिंपल हर्ट. Okay, then 324 is punishment for simple hurt but given with dangerous weapon. Okay, dangerous weapon क्या होता है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ओके, सो सिंपल इंजरी की पनिशमेंट को अगले दो क्लॉजेस में डिफाइन किया गया है after the definitions have ended in section 322. So 323 and 324 are dedicated for punishment of simple injury. 323 provides simple injury punishment. 324 provides punishment for a special scenario when injury onto the body is simple but it has been delivered to the body with a weapon which is called as a dangerous weapon. Okay, then 325 is punishment for grievous hurt. तो जैसे डेफिनेशन में सिंपल के बाद ग्रीवियस आ रहा था, वैसे ही पनिशमेंट में भी सिंपल के बाद ग्रीवियस है. तो 325 is definition for grievous hurt and automatically 326 is punishment for grievous hurt provided with dangerous weapon. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, 319 से 326 तक 8 आईपीसी सेक्शंस हैं. द फर्स्ट 4 आर डेफिनेशंस, एंड द नेक्स्ट 4 आर पनिशमेंट्स. किसकी पनिशमेंट, द पनिशमेंट्स ऑफ द डेफिनेशंस which have been described in the previous sections. So 319, 320, 321, 322 defines, 323, 324, 325, 326 punishes for different scenarios which are given in the definition. Okay, तो हम अगर पनिशमेंट को ठीक से समझना चाहते हैं, so we need to understand everything that has been written in those 4 important sections of punishment. And one thing that was something unique that was written there was dangerous weapon. So आइए समझते हैं what are dangerous weapons. Any weapon
which is used for cutting, stabbing, or shooting is a dangerous weapon. Okay. On top of this, the law says, or the use of which endangers life, in that case the weapon becomes dangerous. मतलब समझने की कोशिश करते हैं. इनफैक्ट कोशिश करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है, आप आराम से समझ जाओगे. So look at the first line. It says any weapon which is used for cutting, stabbing, or shooting. So what kind of weapons are we talking about in these lines? For shooting, we require firearms. So all firearms are considered as dangerous weapons. Any kind, any make, any technology, all firearms are dangerous because they are used for shooting. Then what kind of weapons are used for cutting or stabbing? The weapons are sharp. Sharp weapons are used for cutting, and pointed weapons used for shooting. Oh, sorry, for stabbing. So sharp and pointed. So what we see here is all those weapons which are either belonging to a category of firearms, or all those weapons which are belonging to the category of sharp and pointed weapons are taken as dangerous weapons, which means all the blunt weapons are considered all the blunt weapons are considered non-dangerous per se. ठीक है. सो पहली लाइन का मतलब तो ये हुआ. दूसरी लाइन का मतलब क्या है? दूसरी लाइन देखिए क्या लिखा है, और द यूज ऑफ विच एंडेंजर्स लाइफ, देन द वेपन बिकम्स डेंजरस. तो दूसरी लाइन क्या कह रही है? दैट फायर आर्म, शार्प पॉइंटेड वेपन्स तो डेंजरस हैं ही, ब्लंट वेपन्स which are actually considered as non-dangerous weapons, if we use these blunt weapons in a way that the resultant injury by them endangers the life of the victim, in that scenario even that blunt weapon will be considered as dangerous weapon. Okay, let's take an example. If I go and attack a person with a knife, and I give him an incised wound on his forearm, legally it will be qualified as a scenario that I attacked the person with a dangerous weapon, because knife per se is considered as a dangerous weapon. Okay. On the other hand, if I go and attack a person with a lathi, okay, a wooden lathi, now that wooden lathi is not a sharp weapon, it is not a pointed weapon, it's not used for shooting, so it's not a firearm. So it's a blunt weapon which normally is considered as non-dangerous. And if I hit that lathi on his forearm and he develops an injury which is a bruise, let's say, then it will be considered legally that I have attacked the person with a non-dangerous weapon. But if I hit that lathi on the head of the victim with good amount of force, as a result he develops an intracerebral bleed or a hemorrhage in the layers of the meninges. Now that is a condition
where his life is endangered. There is a possibility that this person may die and it poses an imminent threat to his life. Now, in this scenario, even this lathi will be considered as a dangerous weapon. तो वही लाठी जो हाथ पे मारने के टाइम पे एक डेंजरस वेपन नहीं थी, उसी लाठी का इस्तेमाल अगर हम इस तरीके से करें कि उससे रिजल्टेंट इंजरी की वजह से विक्टिम की लाइफ एंडेंजर हो जाए, तो लाठी भी डेंजरस वेपन बन जाती है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड में कोई भी वेपन डेंजरस हो सकता है. द डिस्क्रिप्शन ऑल्दो सेज that all the weapons which are used for cutting, stabbing and shooting are per se taken as dangerous weapon by the law, and rest of them are usually non-dangerous unless they are used in a way that the resultant injury is provided by them endangers the life of the victim. ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आए कि डेंजरस वेपन किस चीज को बोलते हैं. सो वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट डेंजरस वेपन इज, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट. बिकॉज इफ यू गो बैक 2 स्लाइड्स, हमने पनिशमेंट की जहां बात करी थी, वी सेड दैट सिंपल इंजरी हैज अ पनिशमेंट, देन सिंपल इंजरी विद डेंजरस वेपन हैज अ पनिशमेंट, देन ग्रीवियस हर्ट हैज अ पनिशमेंट, and grievous hurt with dangerous weapon has a punishment. So we have already defined what is dangerous weapon. Next we need to define कि grievous hurt क्या चीज होती है. So once we are through all the definitions, then you can start to look how punishments for injuries are delivered. As simple as that. Okay, so what is grievous hurt? As I said earlier, we don't need to describe what is grievous hurt, because grievous hurt is already written in IPC 320. Section 320 of IPC already has 8 written clauses, and any injury, if it can satisfy any one of the 8 written clauses which are written in section 320 IPC, that injury will be qualified to be called as a grievous hurt. And if the injury on the body cannot satisfy any one of the 8 written clauses, no matter how that injury has come over onto the body, no matter by what means the injury has been delivered onto the body, it will still not be called as grievous hurt. So the manner of delivery of the injury onto the body, the technique of delivery of the injury onto the body, the instrument used to deliver the injury onto the body are immaterial. The injury which is present on the body shall be the injury which should satisfy one of the 8 written clauses in section 320 IPC to be called as a grievous hurt. So देखते हैं section 320 IPC के 8 clauses क्या क्या हैं. First clause is emasculation. The only grievous hurt that can happen to a male, because you cannot emasculate a female. Okay. Second clause is permanent privation of sight of either eye, and third clause, as you can see, is permanent privation of hearing of either ear. Now there are 2 important words there which needs description, और ये वाले जो है ना clause 2 and 3 historically examinations में
सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने की उम्मीद होती है या फिर आते रहे हैं. The two important words here are permanent and privation. Okay, so what is permanent? When we talk about medico-legal meaning of permanent being used in section 320 IPC, permanent means an injury if that is left on its etiological course, it is not recoverable. ठीक है, तो परमानेंट का मतलब क्या होता है कि अगर उस इंजरी को उसके ही etiological कोर्स पे छोड़ दो तो वो सेल्फ करेक्टिंग नहीं है. सो क्लॉज नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं? परमानेंट प्राइवेशन. एंड प्राइवेशन मीन्स डिप्राइवेशन. डिप्राइवेशन डज नॉट मीन कंप्लीट लॉस. डिप्राइवेशन इज कमी हो जाना, खत्म हो जाना नहीं. ओके, सो इंजरी, अगर आप सेक्शन नंबर 2 देखो तो अब क्या समझ में आता है? परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई. सो इट इज नॉट अबाउट आई, इट इज द साइट ऑफ द आई. सो इफ अ पर्सन सफर्स एन इंजरी बिकॉज ऑफ विच he has a deprivation of vision. So earlier he used to see 100% with both the eyes. Let's take it in percentage. Okay, although sight जो है वो percentage में नहीं बताते हम, but just for calculative sense I am using percentage. So if there is a person जो injury से पहले दोनों आँख से 100% देख सकता था, now he sustains an injury because of which उसको left eye से 20% कम दिखता है. एंड वॉट एवर इज द इंजरी, वो अपने आप सेल्फ करेक्ट नहीं होगी. ऑल्दो उसको आप ऑपरेटिवली करेक्ट कर सकते हो टू रेस्टोर बैक हिज विजन टू 100%, बट इफ यू डू नॉट सर्जिकली करेक्ट इट, it is not going to be restored back to 100% normal. So it is permanent. So now this person has sustained a permanent 20% deprivation of his sensory power, that is vision. This injury would be qualified as grievous. Although left eye से वो अभी भी देख सकता है, 80% vision is still okay, but because of that injury he has sustained 20% permanent loss. Okay, the loss is not complete, it's only 20%. Same goes for clause number 3. Okay, clause number 4 is privation of any member or joint. Joint, you all understand, when two bones meet or culminate at their end, long bones, they form a joint. And member is any part of the body which has its own distinct function. It's called as member. Okay, so any part of that joint जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है, वो ऑल्दो उस एरिया का रहने वाला है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एल्बो जॉइंट, सो वी नॉट ओनली हैव लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, वी हैव joint capsules there, we have synovial fluid there. ठीक है, we have meniscus there, cartilaginous structures हैं. So these are independent members. उसके सिवाय tendons हैं जो joint को lock करते हैं. These are independent members of that joint. उनका अपना एक distinct function है. So if there is privation of any member of joint, it will be classified as grievous. And clause number 4 में आप देखोगे there is no permanency word here. Every clause does not have a permanency attached to it. Okay. Then clause number 5 is destruction or impairment of power of any member of joint. ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गई या impairment of power हो गया. Then clause number 6 is permanent disfiguration of head or face. So if there is an injury either to head or face which causes a permanent disfiguration of this structure, it will be called as grievous. Clause number 7 is fracture or dislocation of bone or tooth
another important area of discussion. The clause simply says a fracture or dislocation of either bone or tooth will be considered as grievous, and this clause does not mention कितने fracture को grievous बोलेंगे. So if there is a fracture which is comminuted when the bone is broken into multiple pieces, it will be grievous. If it is a spiral fracture where the bone segments are intact but then the fracture is running in a spiral line, it will still be grievous. Even if it is a fracture which cannot be well visualized on X-rays but can be seen on CT because it's a very thin hairline fracture, it is still called as a fracture, and that would also be grievous because the clause does not classify what will be called as a fracture. So every fracture is a fracture. Okay. And then clause number 8, which is again very interesting because it is further subdivided into 3 subclauses, 8A, 8B and 8C. 8A says all injuries endangering life will be called as grievous. So if you recall, when we were talking about the nature of injuries, we said that injuries could be of 3 types: simple, grievous and dangerous. याद आया? और clause number 8A में हम क्या कह रहे हैं? All injuries endanger life will be termed as grievous. और dangerous injury क्या करती हैं? They endanger life. So according to clause 8A of section 320 IPC, all dangerous injuries are grievous. ठीक है? So what we are saying is all dangerous injuries are grievous. Vice versa is not true. All grievous injuries are not dangerous, but all dangerous ones are grievous according to section 8A of section 320 IPC. 8B says any injury that causes the sufferer to be in severe bodily pain for a period of 20 days also will be called as grievous. And 8C says any injury because of which the person is unable to perform his ordinary daily pursuits for a period of 20 days will also be called as grievous. Okay, what are ordinary daily pursuits that you and me commonly do when we wake up or we move throughout the day? That means, eating, bathing, changing clothes, washing, etc. etc. Okay. So apart from knowing what kind of punishments are given, one has to know the distinction between grievous hurt and simple hurt also. Now that we have full definitions and scenarios available, now we can proceed on to understand what are the injuries that are given under different sections of IPC. Okay, so what did we see earlier? That sequence of IPC starts from IPC 319 till 326, and the first 4 from 319 to 322 are definitions of various scenarios, and then 323 onwards are punishment for those definitions. So 323 is the first punishment in that line, which punishes for simple injury. If you recall, the punishment is up to 1 year of imprisonment or fine of up to 1000 rupees और बोथ. ओके, सो या तो 1 साल तक की जेल की सजा या 1000 रुपये तक की फाइन की सजा या दोनों. एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने गुस्से में आकर के वॉलेंटरली दूसरे इंसान को थप्पड़ मारा
and he has bruising on his cheek, that will be a simple injury because dangerous weapon को use नहीं किया आपने. So you are liable to be prosecuted under IPC 323, and the punishment available there, if you are proven guilty in the court of law, is up to 1 year of imprisonment or up to 1,000 rupees fine, or a combination of both. That is the discretion of the judge. ठीक है? Then 324, which provides punishment for causing a simple injury voluntarily but with a dangerous weapon. तो इंजरी सिंपल ही है बट वेपन डेंजरस हो गया. अब सेम एग्जांपल लेते हैं. आपने उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारा, आपने ब्लेड से लेकर के उसके हाथ पे काट दिया. लेट्स से यू गेव एन इंसाइज वुंड with a blade on his hand. The wound is not very deep, but you still ended up giving him a simple injury because this wound will not qualify any of the sections of 320 IPC. So it will not be categorized as dangerous, or sorry, as grievous. So it will be a simple hurt. Okay. But this simple hurt has been delivered with a dangerous weapon. With a dangerous weapon, and the combination of two is provided punishment under section 324 of IPC, and the punishment here is higher. अब punishment कितनी हो गई? up to 3 years of imprisonment or fine. अब fine mentioned नहीं है, so it is the discretion of the judge कि वो कितना देना चाहता है, or both, or a combination of two of them. Then third is 325, which provides punishment for grievous hurt. Okay, grievous hurt with a simple weapon because no dangerous weapon is here. So if you hit a person with a lathi on his forearm and ends up breaking his forearm bone, let's say you break his radius. Now, do you remember clause number 7, fracture, dislocation of bone or tooth is grievous? So now that the bone is broken over here, it becomes a grievous hurt, and the weapon that you have used is a lathi, so it's not a not dangerous weapon because this breaking of bone is not going to endanger his life. So lathi dangerous होने भी नहीं वाली है, और normally वो एक simple non dangerous weapon ही रहती है. This scenario will be punishable under section 325 of IPC, where the punishment is up to 7 years of imprisonment along with fine. Okay, and then 326 is grievous hurt with dangerous weapon, यानी कि आपने grievous hurt भी दिया है, साथ में weapon भी dangerous यूज किया है. Okay, for example, if you stab somebody in the abdomen, now the weapon used is cutting or stabbing weapon, and if you stab somebody in the abdomen and as a result he sustains a grievous injury, let's say it cuts his one of the important vessels of the body and he is having profuse bleeding, now that's a situation which is going to endanger his life because he can die of hemorrhagic shock. And remember clause 8A जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, any injury endangering life will be classified as grievous. So you have ended up supplying with grievous hurt with a dangerous weapon. Second example which we took of that lathi some time back, that you hit lathi somebody on somebody's head. Although lathi is normally a non-dangerous weapon, but in this case when you hit the lathi with lot of intensity on somebody's head and he develops an intracranial bleed, his life may be endangered. In this case lathi becomes a dangerous weapon. Fine, and thus the person will be prosecuted under section 326 of IPC, where the punishment is up to 10 years of imprisonment and fine. So what do we see? जैसे जैसे हम सिंपल से ग्रीवियस की तरफ जा रहे हैं, as you can see, the punishment is increasing. The punishment is increasing. Now आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम ये सब क्यों जाने, ये तो उन लोगों को जानना चाहिए who is practicing law. No, ये डॉक्टर का काम है कोर्ट को बताना कि इंजरी ग्रीवियस थी
या नहीं थी, वेपन जिससे वो इंजरी कॉज हो सकती है, क्या वो डेंजरस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, एंड दैट डिपेंड्स अगर आपने इंजरी का टाइप सही बताया है. ठीक है. सो दिस इज द कोरिलेशन दैट अ डॉक्टर हैज टू ड्रॉ आफ्टर हिज एग्जामिनेशन either of a survived person or a dead body who have sustained injury because of a voluntary action of somebody else. And when you deliver this opinion as an evidence in the court of law, it helps the court of law to give a proper judgment. And is this not the basic crux of forensic medicine? I told you in the beginning of our series 15 days back, what is forensic medicine? It is the application of medical knowledge towards delivery of justice. ठीक है. So this is what a doctor has to do, and that is why inspection and drawing inferences from injury are very very important. Okay. If you have, आपने अगर टाइप ही इंजरी का गलत लिख दिया, then everything is going to be going into a wrong pathway. Good. Because this is so meticulously correlated, इसीलिए इस एरिया में से क्वेश्चंस ट्रेडिशनली बहुत सारे आते हैं. ओके. नाउ इन फ्यू स्लाइड्स अर्लियर I told you that sequence of injury is from 319 to 326 and then 334 to 335. In 319 to 326 we were talking about injury caused voluntarily. Correct? Injury caused voluntarily. इंजरी जो वॉलंटरी एक्शन से दी गई है. 334 and 335 are very significant clauses because they talk about punishment of voluntary causing hurt. हर्ट तो वॉलंटरी किया है आपने, बट ऑन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन. यानी कि जिस आदमी ने इंजरी करी है विक्टिम के ऊपर, वो उसको इंजर करना नहीं चाहता था, बट कुछ ऐसा हुआ that the victim provided a sudden and a grave provocation to him, and inside of that grave provocation he ended up providing injury to the victim himself. If this is the scenario, they are punished differently because they are defined in a different IPC clause. The IPC clause here is section 334 and 335 IPC. And what does 334 punish for? It punishes for causing simple hurt on sudden and grave provocation by the victim to the assailant. So I am taking an example so that you can follow it. Let's say there is a person A and there is a person B. They are normally talking together. Nobody of them has any intention of providing the other party with any kind of hurt or injury. What happens is A suddenly says something which gravely provokes B. So B gets provoked by A. The provocation is sudden and grave enough that B hits A. B under provocation hits A. Okay, and A sustains an injury which is simple. This scenario will not be punished either by 323 or 324 IPC because they were punishing for simple injury. याद आया? 323, 24 otherwise punishes for simple injury being caused voluntarily. Here the scenario is
sudden and grave provocation, if the recipient has simple injury, the assailant will be punished under IPC 334, and the injury here is up to 1 month of imprisonment or fine of up to 500 rupees or both. So can you see there is significant decrease of punishment if the simple hurt received by the victim is because of the provocation he himself provided to the assailant. So provocation victim का ही दिया हुआ होना चाहिए, तभी ये क्लॉज एप्लीकेबल है. अगर किसी और आदमी ने assailant को प्रोवोक किया और उसके बाद assailant ने जाके किसी और victim को मारा, that would not be called as sudden and grave provocation given by the victim. उस केस में ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके और अगर इसी सेम सिनारियो में अगर हम ये कहें that A provided a sudden and grave provocation to B and under provocation B hit A and A sustained a grievous hurt, then B will be punished under section 335 of IPC, which punishes for grievous hurt on sudden and grave provocation by the victim to the assailant, which is punishable up to 4 years of imprisonment और फाइन ऑफ अप टू 2000 रुपीज और बोथ. सो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आप देखें हमने बात करी थी 323 एंड 324 आईपीसी की. बोथ वर पनिशिंग फॉर सिंपल इंजरी एंड द पनिशमेंट रेंज्ड फ्रॉम 1 year of imprisonment to 3 year of imprisonment. Correct? 334 also punishes for simple injury, but what kind of simple injury? Which has been given under grave and sudden provocation. Here the punishment is 1 month of imprisonment. कितना significant कमी आ जाती है उसमें. Okay, and similarly 325 and 326 were punishing for grievous injury, and the punishment amongst them ranged from 7 years to 10 years of imprisonment, and 335, which also punishes for grievous injury but on sudden and grave provocation only. Here the punishment is up to 4 years of imprisonment. Again a very significant dip that comes up. This is the significance of sudden and grave provocation to the punishments of injury. ठीक है, अब आते हैं हम अपने असली काम पे. ठीक है, आज मैंने आपके साथ में जो कुछ भी शेयर किया है इसको आप अपने आंसर्स को करेक्टली मार्क करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करोगे वो देखते हैं. सो व्हेन आई से वॉलेंट्री causing hurt, और इफ यू गेट अ क्वेश्चन जहां पर कोई इंजरी रिसीव करी गई है विक्टिम के द्वारा एंड द क्वेश्चन इज असेलियंट को कैसी सजा होने वाली है, यू नीड टू फॉलो दिस फ्लो चार्ट. दिस फ्लो चार्ट इज बाइबल फॉर यू, गीता फॉर यू. आज से इस फ्लो चार्ट को आप फॉलो करोगे, आप इंजरी के क्वेश्चंस हमेशा राइट करोगे. व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट हैज टू बी गिवन. सो जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आएगा दैट एन इंजरी हैज बीन कॉज्ड विच हैज बीन डिलीवर्ड वॉलंटरली, व्हाट यू नीड टू सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर एनी sudden
or grave provocation was involved or not. If sudden and grave provocation was involved, then you need to see that whether the resultant injury was simple or it was grievous. If it was simple, it will be punishable under section 334. If it was grievous, it will be punishable under section 335. उनमें क्या punishments होती हैं वो हमने पहले ही बात करी. On the other hand, if you get a question of voluntary causing hurt and no provocation was delivered to the assailant by the victim, then you need to see first of all that the injury which was received by the victim was simple or grievous. If simple, whether it was given by a simple weapon or dangerous weapon, if no provocation was involved, it is simple and it is given by a simple weapon, punishment comes from 323 IPC, which is up to 1 year of imprisonment. If it is simple but given by dangerous weapon, it comes under section 324 IPC. And same thing for grievous hurt where no provocation was involved. So if there was no provocation, the hurt is being given voluntarily and the resulting injury is grievous to the victim, you again see what kind of weapon, simple or dangerous. Grievous hurt with simple weapon, punishment comes under section 325 IPC. Grievous hurt with dangerous weapon, punishment comes under section 326 IPC. इस चार्ट को समझ लो एक बारी, याद कर लो एक बारी, rehearse few MCQs by keeping this chart handy in front of you. You write it down somewhere, you keep it in front of your sight. Try 5 or 6 MCQs by looking at the chart and then try 5 or 6 more MCQs without looking at the chart so that you can see if you remember the flow chart or not. And I bet after that, once this chart is by heart to you, whatever questions that you solve, your answer would be 100% right all the time. And at the beginning of this class मैंने आपको क्या कहा था? My job, our job as teachers is to empower you that you practice on the right track. Practice करना थोड़ा सा आपका काम है. Okay? Great. आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे. ठीक है? So that was the information I had to share with you in today's class. Okay? Where we learned किस तरीके से इंजरीज की हम पनिशमेंट्स देते हैं. If you like this class, good. अगर आपकी कुछ queries हैं, Telegram ऐप पे you can connect to me at livedaily.me/neetpg. अगर आपको अब अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का मन कर रहा है
पर फिर भी आप जानना चाहते हो मुझसे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, लाइव क्लासेस हैं, मेरे जैसे और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं विच इंटरैक्ट विद यू लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, लीडर बोर्ड एनालिसिस मैं बताता आ रहा हूँ हर बारी से, स्पेशल क्लासेस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप फ्री में देख सकते हो। गो टू डाउनलोड द ऐप, वॉच स्पेशल क्लासेस एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जब ऐप इंस्टॉल कर चुके होगे अपने फ़ोन में, आपको सिंपली नीट पीजी सिलेक्ट करना है, बिकॉज आपको नीट पीजी के लिए चाहिए ना सब्सक्रिप्शन, और वहाँ से आपको प्लस पकड़ लेना है। नीट पीजी प्लस इज द सब्सक्राइब्ड फॉर्मेट, और यहीं पर देखिए आई एम शोइंग यू स्पेशल क्लासेस हैं, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। ये उसी प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन क्लासेस हैं जिस पे प्लस होता है। सो इफ़ यू वांट टू सी कि प्लस का प्रीव्यू कैसा होगा, स्पेशल क्लासेस में देख लो, आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा। ओके, देन यू गो एंड गेट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बाय 12 months और 24 months, वॉट एवर इज अपीलिंग फॉर यू, एंड देन पे अप। पेमेंट मेंशन्ड है यहाँ पर, और अगर इस पेमेंट में भी यू वांट 10% डिस्काउंट, यूज माय रेफरल कोड, दैट इज Dr. Sumit Live, you'll get 10% discount on your outstanding payment. You have different paying options, EMI, debit card, UPI, choose whatever works for you. ओके जी, इस तरीके से आप नीट पीजी प्लस प्लेटफॉर्म पे आओ और एक्सपीरियंस द जर्नी देयर। Everybody is committed there for you to crack 2021 NEET PG entrance examination. आज की क्लास अगर आपको पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे बने रहो। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, इट्स बीन 15 odd days, okay, 13-14 days. We are going to go for many upcoming days towards covering our talk on the subject of forensic medicine. Okay, I'll take your leave tonight. My referral code is Dr. Sumit Live. Do use it if you are taking any subscription on Unacademy to avail 10% discount on that subscription. ठीक है जी, bye bye, good night, be safe, keep yourself safe, your neighborhood safe during this pandemic, but inside your home completely enjoy life. कल मिलते हैं 12 बजे in our MCQ session, and till then, good night.